हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फाइनल टर्म पेपर्स ऑफ 6 सेमेस्टर। मॉर्निंग आफ्टरनून दोनों डिस्कस कर लूँगा और ये लेटेस्ट है जनवरी 2023 के। सो बिगिन विद इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 1, द एरा 683 to 705 is considered zenith of Umayyad power and make a detailed comment on how under Abdul Malik's rule and during the reign of Al-Walid and Hisham, the Islamic Empire reached its greatest expansion, stretching from shores of Atlantic Ocean and Pyrenees to proverbial mighty Indus. And question number 2 के अंदर कहता है The establishment of the Abbasid was generally held as representing the substitution of the true conception of caliphate. Is that in that backdrop what the exalted office of the caliph show? And question number 3, discuss the political circumstances and rituals that gave life to Islamic art and architecture, and what is the significance in contemporary Islamic world. Modern drama. Question number 1, explain the following. Reference to context. Say part A, no, that is just it. You don't understand me and I have never understand you either before tonight. You mustn't interrupt me. You must simply listen to what I say. Again, Doll's House से लिया गया है. Or part B, I told him what to do with this bucket. Didn't I? You heard. Look here. I said, I am an old man. I said, I bought up. And again, जो caretaker से लिया गया है. Question number 2, the obfuscation and incompetency of human beings to challenge and to understand the existence of God can be vividly observed in the monologue of a Lucky, and where he tries to build up his theological arguments in Samuel Beckett's tragedy Waiting for the Godot by keeping in mind the unconventional form patterns settings of the play, critically analyzes significance of Lucky's speech. आपने एनालाइज करना है फ्रॉम एब्सर्डिज्म या एग्जिस्टेंशलिज्म के थ्रू. And question number 3 is theater is for me the outward projection onto the stage of an inner world, and it is my dream in my anxieties, in my obscure desires, in my internal contradiction that it for me for one reserve for myself the right of finding my dramatic subject matter, keeping in view Ionesco's stance in relation to the theater of the absurd. उसने ये कहा था, discuss the presence of existential elements and dreams and aspirations of Davis Aston Mick, जो कि हेरोल्ड पिंटर केयर टेकर में से वो चीज़ें आपने डिस्कस करनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से. एंड देन मॉडर्न नॉवल. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन द प्लॉट ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस. Who, according to you, has the greatest influence on life of Kurtz and how? Obviously, Kurtz के लाइफ को इन्फ्लुएंस किया था his greed for ivory या पावर फॉर लस्ट फॉर पावर, इस तरह के नोशन या आइडियाज़ ने ट्रांड किया था इज हार्ट इनटू हार्ट ऑफ डार्कनेस. योर आंसर बी सब्सटेंशिएट बाई फ्रॉम द स्टोरी यानी नॉवल से आपने वो करना है. क्वेश्चन नंबर 2, मिसेस रामसे इज़ डेड बाय द टाइम द सेकेंड सेक्शन ऑफ द नॉवल यानी टाइम पासिस. उस टाइम पे तो मिसेस रामसे की डेड हो जाती है ऑफ द नॉवल टू द लाइट हाउस, yet she manages to dominate the second and third section of the novel. किस तरह? Yes, she is most important figure. She is the protagonist of the novel और उसका बड़ा रोल रहता है. although उसकी डेथ हो जाती है yet उसी की बात चल रही होती है, उसी के थॉट्स चल रहे होते हैं. लिली बार बार उसके बारे में सोच रही होती है. So this is how she dominates the plot. Question number 3, what do you feel Golding's vision of humanity is? Again, inherent, he tried to establish the idea that human beings are inherently evil. What does he believe, in your opinion, to be at
a heart of an individual, an instinct for peace and cooperation, or the one for the dominance and savagery. And how does his vision of humanity compare with your own? Grammar and syntax. Question number 1. Analyze the following syntactic constructions and identify the underlying clauses. Types of clauses और उनको identify करना है. Draw tree diagrams for the following sentences and then assign an appropriate grammatical function to each phrase. Or question number 2 है, discuss the notion of head, complement and modifiers. Write down a comprehensive note on phrase structure, roles, X roles and features, and provide suitable examples to support your answer. Question number 3, what is the evidence of structure in sentences? Provide a detailed account of some syntactic tests used for constituent structure and support your answer with appropriate examples. अभी आफ्टरनून के पेपर्स देखते हैं. मॉडर्न पोइट्री. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है. He was married and added 5 children. Again announced reason से लिया गया है by W.H. Auden. और दूसरा जो है और look in the mirror as I walk out one evening से लिया गया है. और क्वेश्चन नंबर 2 है, hawk roasting is a poem that puts the reader into an imagined mind of a hawk about to rest for the day. It's a monologue या हॉक रोस्टिंग को हॉक्स मोनोलॉग भी कहा जाता है. अल्टरनेट टाइटल है इसका. ऑफ अ raptor given power of a human being and this personified, and this particular work relies on personification, and the bird is speaking to itself like a human being, describing the violent scenes, claiming domination, which means that the reader has to wrestle with the ideas that go beyond the animal kingdom into realm of human beings and associated psychological and political issues critically analyze करना है. So ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है. टेड ह्यूज किस तरह एनिमल इमेजरी यूज़ करते हैं, उसका क्या मकसद है, और हॉक रोस्टिंग को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है. आप वो वीडियोस देख लें. Question number 3, Mr. Blini by Philip Larkin is essentially a poem about circumstantial situation. Zait is given a dramatic monologue and rather like a drama tells a story that is full of lucid mystery. Discuss the major themes of the poem in the light of the above statement. Themes को जहन में रखते हुए critical analysis करना है मिस्टर ब्लिनी का. सो अगेन वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है मिस्टर ब्लिनी का. Islamic history and culture. Question number 1, what factors and actors led to decline and fall of Umayyad? Simple question है, fall of Umayyad डिस्कस करना है. Question number 2, at the time of its establishment, the Abbasid victory has held as representing the substitution of the true conception of caliphate. How the exalted office of caliphate show it. कि उमैया अब्बासिड कैलिफेट किस तरह ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, इसको आपने बताना है. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द वर्क ऑफ स्कॉलर जलालुद्दीन रूमी एंड हिज फार रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड बियॉन्ड. मॉडर्न नॉवल. How could Lord of the Flies be described as allegory? ये मैंने डिस्कस किया हुआ अलग से वीडियो में. Lord of the Flies is an allegory, और इसके अंदर कौन सी allegory है, symbolism भी मैंने डिस्कस किया हुआ है. So if it is an allegory, what message does Golding seems to get across the readers, and what allegorical roles the characters playing, वो भी मैंने किया हुआ है. What are the major conflicts in To the Lighthouse? Explicate your answer with textual support. So obviously women के related प्रॉब्लम्स फेमिनिस्टिक उस लिहाज से भी आप देख सकते हैं, या दूसरे कन्फ्लिक्ट में तो वही है. सो इट इज़ सेड दैट एवरीवन कैरीज विद इन हिम और हर अ कॉन्गो. डिस्कस हार्ट ऑफ डार्कनेस एज अ जर्नी विद इन. एंड मॉडर्न ड्रामा. सो आपने क्या करना, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पीकर, प्ले एंड प्ले राइट of these
ठीक है, ये मैंने किया हुआ है सॉल्व करके आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज what are the characteristic features of the theater of absurd discuss in the light of waiting for the Godot। सो वेटिंग फॉर द गॉडो किस तरह एब्सर्ड प्ले है, या एब्सर्ड प्ले की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो वेटिंग फॉर द गॉडो के अंदर किस तरह फुलफिल होते हैं, वो अपने डिटेल के साथ एग्जांपल्स देख के प्ले में से डिस्कस करना है। हेरोल्ड पिंटर्स प्ले आर कंसिडर कॉमेडीज ऑफ मेनास इंट्रूजन एंड वायलेंस। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ वायलेंस इन द प्ले। केयर टेकर के अंदर वायलेंस के एग्जांपल्स आपने करने हैं। Grammar and syntax. Question number 1. Draw tree diagrams for each of the following sentences and mention PS rules that govern the division of the constituent in each sentence. Simply tree diagrams बनाने हैं PS rules को follow करते हुए। Answer the following question. Part A. Discuss the 3 syntactic tests that can be applied to determine subjecthood in English सेंटेंसेस। ऑब्वियसली 3 टेस्ट जो है हमारे पास एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेक क्वेश्चंस और ऑक्सिलरी इन्वर्जन कहा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन एडजेंट एंड कम्प्लीमेंट विद एग्जांपल्स, यानी सिंपल वर्ड्स में मॉडिफायर एडजेंट्स तो मॉडिफायर्स ही होते हैं, सो मॉडिफायर्स या कम्प्लीमेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है। ऑब्वियसली टेस्ट से वो टेस्ट आपने डिस्कस करने हैं, 3 से 4 5 तक टेस्ट से वो सब कुछ डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 3. डिस्कस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द पीएस ग्रामर इन डिटेल एंड हाउ यानी ट्रांसफॉर्मेशन टीजीजी कंसिडर टू मेड अप। ये मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।